Hi guys, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. This is your host Akransh Kataria. And via this video, I'm going to tell you top 5 principles that you should keep in mind while investing your good money. And trust me on this, once by the end of this video, you'll get a total clarification on what pointers that you should keep in mind before making any sort of investment, especially into the real estate segment of Gurgaon. Point number 5, overhype. When I talk about overhype, you need to understand one factor. There are a lot of products coming into the market. अभी कुछ launches हुए हैं market में in a short frame of time. Starting from February, we are sitting in the month of December. कुछ products आए हैं जो कि overly hyped, overly advertised हुए हैं market के अंदर. But you need to understand one very simple fact that with each and every developer, you talk about the top-notch developers to the kind of a developer who are still trying very hard to establish their name into the market. All the kind of a developer, they definitely have that kind of a stock which is really hard to sell it off, right? If I talk about DLF, if I talk about other big shot developers, उनके पास हमेशा ऐसा स्टॉक अवेलेबल आपको जरूर मिलेगा जहां उनको बेचने में वो प्रोडक्ट दिक्कत आती है या वो स्टॉक बेचने में दिक्कत आती है, right? So due to which they put a lot of pressure onto the sales team. मार्केट में उस प्रोडक्ट की इतनी हाइप बनाई जाती है, उन इन्वेंट्रीज की इतनी हाइप बनाई जाती है दैट वी एनी व्हिच वेज दैट प्रोडक्ट हैज टू बी गेट सोल्ड आउट, राइट? नाउ once we talk about overhype, there are 2 pointers that you should definitely keep in mind while evaluating the kind of a hype that the product have into the market. The very first is quantitative analysis. Now once I talk about quantitative analysis, we talk in terms of the data, the kind of a inventory that the product has sold out into the market, the kind of a stock developer still have the availability of, the price on which the product got launched, and the price which is getting retraded into the market. This is the kind of a data that you need to have onto your fingertips. Now once you do your due diligence, you definitely get, or once you get sit over the internet, you'll definitely gonna get this kind of a data very easily, right? Now second pointer I'm going to include is comparative analysis. Now once we talk about the comparative analysis, which definitely includes the kind of a product any developer has launched into the market versus kind of a product that they have already delivered into the market. Now with any launch into the market, you are definitely going to get some kind of a renderings over the social medias, which is going to give you a glimpse the kind of a development is about to happen, right? But I would really suggest you that do not just fall for the renderings. You have to do your comparative analysis. And how you can do that? वो comparative analysis सिर्फ आप कर सकते हैं कि जो product launch हो रहा है market के अंदर versus जो product वो develop already market में establish कर चुके हैं. Now what kind of facilities they have provided, what kind of infrastructure they have provided, what kind of external facade or else what kind of internal green area that they have provided, and what kind of perks you are getting into that particular condominium that is kind of a unique in itself, right? So first, overhype, and into the overhype, you have to keep these 2 things in mind. First is your quantitative analysis, first your comparative analysis. The first point. Point number 4, which is I'm going to include, is CDO, contractor, developer, and operator. These are the 3 pointers which are very, very crucial, which is going to direct your investment in a kind of a direction. Either it can be fruitful or it can definitely give you a negative impact. How? Now let's take an example. There are a lot of contractors into the market जो कि as a contractor they are very well established, they are very good in their construction. But again कुछ contractors ऐसे भी हैं, they became developers. Now if I talk as a contractor, they are excellent. But are they really excellent as a developer? There is a question mark. The third sub pointer into it is operator. बहुत ही crucial pointer है. Operator कौन है आपकी property का? Property is being developed, बन के खड़ी हो चुकी है. It's fully functional now. Residents रहते हैं यहाँ पे. Operate कौन करता है? A very important factor. Because what happens is कि अगर आपके developer कोई और हैं, कॉन्ट्रैक्टर कोई और है या फिर ऑपरेटर कोई और है, सो आप देखेंगे कि जब ये तीनों, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ वेरी branded
कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर और ऑपरेटर कहीं ना कहीं एंड में जाके एक प्रॉपर्टी जो डिलीवर होती है कुछ समय के बाद, इन अ स्पैन ऑफ लाइक अदर 1 ईयर और 2 ईयर्स, वो प्रॉपर्टी ऐसी लगती है ये प्रॉपर्टी आपका शायद 8-10 साल पहले डिलीवर हुई है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब हमें डेफिनेटली बहुत क्रूशल हो जाता है एक ऐसा डेवलपर ढूंढना, बिकॉज बाद में क्या होता है, ये ब्लेम गेम हो जाता है फिर कि कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं था, डेवलपर ठीक नहीं था, या फिर ऑपरेशंस ठीक से नहीं हो रहा है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको ये 4th पॉइंटर इंक्लूड किया, CDO, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर एंड ऑपरेटर, बहुत बहुत क्रूशल हो जाता है आप लोगों के लिए डिसाइड करना कि सारी तीनों चीज़ों में कौन सा ब्रांड है। सो कहने का मतलब है एंड में अगर तीनों डेविएट होंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड में जाके ब्लेम गेम देने के लिए, until and unless you are a very well shot, big shot and a very branded name into the real estate market. So safest, sound and secure pointers कैसे शॉर्टलिस्ट करें? सो गाइज, इसी पॉइंटर में मैं टॉप रैंकिंग पे, नंबर 1 रैंकिंग पे किस कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर एंड आपका ऑपरेटर को रखना चाहूँगा? डेफिनेटली सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क की आप देखेंगे जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपका इन हाउस ही है। कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, मास्टर डेवलपर खुद ही हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं तो गाइस अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल की हॉस्पिटैलिटी, नेक्स्ट लेवल का ऑपरेशंस। जस्ट हैव अ लुक ऑन टू द एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन दैट दिस डेवलपर हैज़ प्रोवाइडेड into a kind of a product which is already delivered back in time 10 years ago. So इस CDO में मैं एक पॉइंटर और इंक्लूड करूँगा. Definitely I'm gonna emphasize for you guys if you're looking for the very, I won't say good, but the greatest investment of your lifetime. Guys, you should definitely 100% get attached to Central Park, because Central Park, they don't just deliver real estate, they deliver an experience. So point number 3, which is very crucial while managing your investment portfolio, which is master developer. So guys, it is very important for us to evaluate that which developer is worthy enough that wherein we can invest our good money into. Now practically I would say that they are very limited reputed developers established into the market, जहाँ पर आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, it can definitely give you multiple folds of, if I talk in terms of your capital appreciation or if I talk in terms of your ROI. Now once I talk about the master developer, you definitely consider the kind of an infra that particular developer has already provided in the market. Now if you just have a look onto this beautiful condominium, you can definitely see the kind of a external facade that this developer has provided into the market. Now, once you look onto my right hand side, just have a look the kind of a gap each and every tower holds between themselves, right? And this is the kind of a factor, this is a kind of a condominium that you definitely look into your society, and definitely ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी डेवलपर के बस की बात नहीं होती है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, राइट? नाउ आई कैन ऑल्सो शो यू द काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट हैपेंड इनटू द मार्केट, जो टावर्स एक दूसरे को बहुत नज़दीक से फेस करते हैं. नाउ यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. जो भी सोसाइटी है, जो भी डेवलपमेंट आपको ऐसे मिलेगी facing each other, and if the towers do not have any sort of gapping between them, और अगर एक डेंसिटी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, जो कि अपने आप में एक डेंसिटी बढ़ाता है ये पॉइंटर, जो इन्वेस्टमेंट इज़ डेफिनेटली ज़ीरो. You can never expect the kind of a appreciation, the kind of a good appreciation that you are expecting from these kind of a property. Now, in order to do a good investment, you definitely have to shortlist the master developer very carefully. So, second pointer, which I'm going to include under the five major principles that you should follow while making an investment into the real estate market of Gurgaon, is the floor plan. So I hope आप लोगों को शायद याद रहा होगा कि मैंने fourth pointer include करा था इसमें, which was CDO, and specifically अगर हम emphasize करते हैं operator, just have a look onto the kind of operations that this developer is maintaining their society.
सो गाइस, जल्दी से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ. दिस इज सेंट्रल पार्क 48, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट, जहाँ पर हम खड़े हैं. इनके स्टूडियोज़ अपार्टमेंट लॉन्च हुए थे बैक इन टाइम. आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 2019 में लॉन्च हुआ था बेला विस्टा. उससे पहले इनकी एक प्रॉपर्टी है जो कि 2008-2009 में लॉन्च हुई थी एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली वेरी नॉमिनल अमाउंट 35-36 लाख odd rupees or so into the year 2008. Now we are into the year of 2023. आज का रीट्रेड प्राइस मैं आपको बता देता हूँ. The property has even crossed the minimum transaction amount of 2 CR, which means already 5 times आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर चुकी हैं यहाँ पे. सो ये तो बात रही आपके प्राइसेस की एंड कितने मल्टीपल फोल्ड्स पे हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे एंड यूजर्स बैठे हुए हैं आज के डेट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ ROE और ROI द क्लाइंटेज आर गेटिंग. सो लेट मी टेल यू, आज की डेट में जो एस्टैब्लिश रेंटल वैल्यू है यहाँ की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 180 रुपीज़ गोइंग अप टू 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. सो मैथमेटिकली अगर हम देखें, फ्लोर प्लान इज अ पॉइंटर दैट यू कैन नॉट अफोर्ड to neglect, and you should not neglect while shortlisting a property into the real estate industry of Gurugram. And definitely your floor plan is directly linked with my fourth pointer, which is CDO, and especially with the operator. So my number one pointer is always and definitely the price per square foot. When we talk about the price per square foot, हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करता है, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, वी डेफिनेटली नीड टू मेक श्योर कि क्या जिस प्राइस पे वो लॉन्च हो रहा है, डू वी व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रोथ होराइजन वी हैव इनटू द मार्केट, इनटू द करंट मार्केट, एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है. डेफिनेटली जहाँ पर स्पेस होगी आपकी प्राइस अप्रिशिएट करने के लिए, वही प्रोडक्ट या वही इन्वेस्टमेंट आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती हैं. बट अगैन देयर आर फ्यू डेवलपर्स, सेंट्रल पार्क इज़ वन ऑफ देम, जो मार्केट का ट्रेंड इस्टेब्लिश करते हैं. मार्केट का ट्रेंड इन्होंने सोना रोड सेक्टर 48 में भी इस्टेब्लिश करा है. नियर बाय विसिनिटी में आप चेक करते हैं 12,000 रुपीज़ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं. अगैन उससे ही उसी सेम एरिया में रहने के बाद सेंट्रल पार्क द रिजॉर्ट ट्रेड ऑफ होता है मार्केट में 25 to 28,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ लॉन्च्ड एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 23,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ पे सेंट्रल पार्क ने मार्केट का एक नया ही स्टेटमेंट दे दिया था, एक नया ही स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया था. उसके बाद बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि सेम एरिया में सेम काइंड ऑफ अ प्राइस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. बट सेंट्रल पार्क एक वो नाम है जिन्होंने उसी मार्केट में रह के 2 दिन के अंदर ही अपना प्रोडक्ट 100% सोल्ड आउट कर दिया था. नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि जिस इन्वेस्टर ने या जिस एंड यूज़र ने 25,000 रुपीज़ के आसपास अपना प्रोडक्ट लिया है उस सेक्टर 104 के अंदर, अब उसका ग्रोथ हॉराइजन कितना है. सो गाइज, लेट मी टेल यू, वहाँ पर जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा इनटू द मंथ ऑफ आइदर February और March, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस एरिया के आसपास लॉन्च होगा. सो आप ग्रोथ हॉराइजन देखते हैं अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही क्या प्राइस जाएगा. नाउ आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, अगर कोई डेवलपर है ऑन टू द द्वारका एक्सप्रेस वे जो क्लेम कर सकते हैं 50-60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, अगैन मेरे माइंड में कोई और नाम नहीं आता है. देयर इज़ नो अदर नेम देन सेंट्रल पार्क. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स, और यही वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जब आप इनको अमलगमेट करते हैं, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द वेरी बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Akransh Kataria, your asset multiplier. Jai Hind.